The app which consumes maximum storage is WhatsApp, because we receive daily messages, we receive daily images, we receive daily videos, and we use it more frequently. So let's first go into WhatsApp and see how we can optimize some of the features in WhatsApp. This is again same for Android and iOS, so you can try those things also. I go in my WhatsApp chats. I see the listing of chat. I go to the setting. So in Android, the setting button will be on the top. In iOS, it's on the bottom. So I click on setting in the right hand bottom corner. I see my profile. Here, there is a button called storage and data. So I click on storage and data. I see some of the things which are there. So first of all, on the top is storage. So if I click on manage storage, I see how much I am using right now. So I'm using 2.46 GB of space on my mobile and WhatsApp. Right? We'll come back to this. Then there are other three things here: network uses, which network we have used. So how much we have used for sending data, how much we have received, right? So here you can see I have sent two less in compared to what I received. So that is almost 7 times, 8 times. How much data I have received, so bytes and all. So this is the computer language. We don't need to much worry about it. But here you can see your stats, how much you are using your network for. Then use less data for calls. That basically works if you're, let's say, in a very good network area. You can reduce the network usage if you are. So this generally people used to use when the net was paid network. Nowadays, most of the services are either inbuilt in your bills or free. So we don't use it too much. Then there is a section on media auto download. You can see this into your Android also, and in iOS also you're seeing it's media auto download. Right? So this can be used based on what we want to prefer, right? And then there is media upload quality. We will go through these things in detail. Then there is media upload quality. So this is when we decide what quality of image I have to send. Okay. Now let's go one by one what these means. Abhi, anything so far, have you been able to navigate till now, either on Android or iOS? आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप में सेटिंग्स में जाके स्टोरेज एंड डेटा सेक्शन है, both in Android and iOS. Okay. Now let's click on manage storage. So when we go in manage storage, depending on which mobile you are using, or if you have purchased free space, more space by paying some amount. So for example, because I use a lot of my storage in Android and different apps, so I have purchased some extra space. So most of you will see around 12 GB or 15 GB of total space or 20 GB of total space. But because I have purchased extra space, it's showing 200 GB available free. In this, it shows how much memory I use. Out of 200, I have 208. I have used only 2 GB right now. In WhatsApp, I would have used it in different places, but here I have only used this much. Now, how do we manage this? So many of you would be seeing this is going almost to the end. You have less than 5 GB or 2 GB available or 8 GB available out of overall. So first it shows review or delete item. Here, what WhatsApp does is it lists down the large files which are there in your WhatsApp. So someone would have sent you a big video, 2-minute video, or someone would have sent you some graphic or album PDF file. So for example, your insurance policy, they would have sent you on mobile. So that's a PDF document that takes more space. Someone would have sent you some old scanned album for you. So that takes a lot of space. If I click on this larger than 5 MB, so they filter it at 5 MB. If I click on this, I will see the list of things which is there on my WhatsApp
and using large spaces. So for example, right now I have some APKs, which is an app, then some images, videos. Right? If I scroll down, I can see what all I am having, which is consuming much more space than an ideal photo or a video, right? So here you get at one place what all is there, which is bigger than 5 MB. And the total. And the total how much they are using. Okay. Now let's say I want to delete some of this because I can't go in one group and see क्या है वहाँ पे बड़ा उसको delete करूँ. I can see all of them together here, whichever group they belong to. Now I can select. So if you click on this, so in Android you can click directly on the image, or in iOS you have to select, and then you can select what you want to delete. So if I, let's say, delete some of these files which are there. So I'll just in Android, it is very simple because there is a button which says notification which says select all, and there's a box. So you just click on that and you will get ticks on all the images and simultaneously. Now there you have to decide which you want to keep. So go to that particular box and remove the tick from there. I go back to my WhatsApp, settings, storage and data, manage storage, larger than 5 MB files. So I select, I can, so in bottom in iOS also you can see I can select all, or I select selective folder, because sometimes you might have some files which you want to keep, right? So if you see in the bottom, like for me, my niece's videos are important, so I keep them. Or my reports are important, my medical reports are important, so I will keep them. But I want to delete whatever else is there. So I then go select one by one, and I just, so I want to keep some things. So I select though like that. Okay. And then I just delete. It will ask you to free up the storage, delete any copies of these items. So for example, you have forwarded one message, one video, or someone has forwarded you one video in two different groups. So your mobile would have downloaded both the groups' videos, and that is stored in WhatsApp. What WhatsApp does here is they will identify any copies of the same. So it is asking to free up storage, delete any copies of these items. तो जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी तक, उसका अगर कोई कॉपी भी है इस मोबाइल में, व्हाट्सएप ऐप में, वो भी ये सेलेक्ट कर लेगा. क्योंकि कई बार होता है एक ही फोटो 2 बार आ गई, वीडियो 3-4 बार आ गया और वो डाउनलोड हो गया, तो ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो या तो मैं कह सकता हूँ कि वो सारी कॉपीज डिलीट कर दे, बिकॉज लेट्स से मुझे नहीं चाहिए उसकी कोई भी कॉपी, तो मैं नीचे वाला सेलेक्ट करूंगा, डिलीट आइटम्स and any copies of the same, or I just select the selected items, delete the selected items. I can decide. So let's say I decide delete items and any of these copies. So it read up. So you see from 2.06 my counter went down to 1.97 GB. Right? So it reduced the memory it has used very quickly. Right? So that is one feature you can We have choose. one in Android. We have one more feature. So we will in Android. They give more options also. There are filters also in the bottom. If you go, there is a filter which decide you want to sort by newest, oldest, or largest. So I can decide I want to see the largest file first. I want to see oldest file first because maybe I'm not needing that file anymore. Or I can see the newest file which has come very recently. I can see that. Android, there are some more features to delete. We will go to that. Any questions so far how to delete larger files which are not useful to us?
जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे, जिसको एक बार देख लिया वीडियो, अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ना? एनी क्वेश्चन सो फार? No, it's okay. Now, second piece is turn on disappearing messages. Tools to, as ये भी WhatsApp भी कहता है, tools to save space. Right? तो इसमें क्या होता है? So what happens in this is a new feature of WhatsApp. We can set automatic disappear in messages. Right? For example, I don't want to keep any message older than 3 months. Right? Or I don't want to keep any message older than 1 year. मेरे को 1 साल पुराने मैसेजेस नहीं चाहिए, मैंने किसी से कोई बात करी हो पर 1 साल पुराना नहीं चाहिए, तो मैं वो टाइम सेट कर सकता हूँ. सो पर यहाँ पे जैसे अभी मैंने ऑफ किया हुआ है. ऑफ का मतलब है मुझे कितना भी पुराना मैसेज हो, एनी ओल्ड, इट कैन बी 3 years old, 5 year old, it will be there in my mobile. But if I set up, let's say 7 days, 90 days or 24 hours, right? I can choose that, and any new chat. So ये नीचे लिखा है, when turned on, all new individual chats will start with disappearing message. तो ये आपकी पुरानी chats को impact नहीं करेगा. The older chats will not get impacted from here. But कोई भी नई chat अगर आप use करते हैं, बना किसी के साथ शुरू करते हैं या किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, तो वहां पे वो अप्लाई होगा. इसके बारे में आपको और अगर समझना है तो आप लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे व्हाट्सएप का और भी गाइड है, उसमें क्या रहता है ना. So ये है, if a user doesn't open WhatsApp in the 24 hours, 7 days or 90 days period, the message will appear from the chat. अगर आपने खोला नहीं है, if you have not read that message so far, then it will stay there. But once you have read it, then it will disappear after 7 days, 90 days, 90 days or 24 hours. So that's how it works. So you can decide कि कैसे करना है. Second option, this is like कि मैंने मेरे पूरे अकाउंट पे कर दिया कि मेरे ग्रुप, whichever chat I decide to use, there it should happen. But let's say I say no, I don't want that to happen in every chat. So for example, I don't want to have this when I'm talking to my father. I want to keep all the messages which I have shared with my father. But let's say there is a some office related work, someone I had come in touch with, but I don't want to continue to see only their chats. I can go. So the second option is set for your current chat. So I can decide here which chat I want to do. इसमें आप ग्रुप्स में नहीं कर सकते हैं अगर आप ग्रुप के एडमिन नहीं हैं. तो जहां पे भी आप ग्रुप के एडमिन है, आप वहां कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कोई, ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं चाहिए उसका मैसेज. I apply. So it will automatically has gone into 2 people, 24 hour disappearing message. अभी तक कोई क्वेश्चन? अभी आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया है, विकास नायक सर. In Android, disappearing messages. Yeah. Where is it coming? Disappearing messages कैसे कर रहे हैं? In Android? Yes. Yes. So जब आप उसमें मैनेज स्टोरेज पे क्लिक कर रहे हैं, मैनेज, मैं एक मिनट इसमें बता देता हूँ. ये जो मैनेज स्टोरेज वाला पेज था, है ना, यहाँ पे जब आप नीचे, एंड्रॉइड में भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, वही एंड्रॉइड में 2-4 ऑप्शन ज्यादा हैं, बट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे है टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस. वो iOS में, एंड्रॉइड में. मैं एंड्रॉइड पे भी आऊंगा अभी, एंड्रॉइड मोबाइल से भी मैं ये दिखाऊंगा अभी 2 मिनट में. एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? हाँ सर. हाँ, ये जो आपने बताया ना कि मैसेजेस व्हाट्सएप में इतना 5 MB का ज्यादा, इतना फाइल्स एटसेट्रा, तो एक
हमारा मोबाइल में उसका अपना भी एक फाइल्स का एक फोल्डर होता है हाँ, जिसमें ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा होता है। हाँ, और एक व्हाट्सएप में भी अगर हम किसी भी लिंक पे जाते हैं तो उसका मीडिया फाइल्स रहता है। हाँ सर, तो जब हम रिमूव करेंगे व्हाट्सएप से हाँ। तो क्या वो हमारा जो मोबाइल का फाइल्स है उससे भी उठ जाएगा कि सिर्फ वहां से हटेगा? तो जब मोबाइल में जब हम व्हाट्सएप का स्टोर करते हैं तो व्हाट्सएप का फोल्डर बन जाता है, उस फोल्डर में जो फाइल है वो भी डिलीट कर देगा। नहीं, एक फोल्डर होता है मोबाइल में हाँ, which is only which जिसका नाम, जैसे कि एंड्रॉइड में सिर्फ उसका नाम है फाइल्स, माई फाइल्स, यस यस, और उसका सब हेड्स है डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑडियोज, आई थिंक यही तीन या एक कुछ और हाँ, होगा। हाँ, हाँ, तो वहां कुछ फाइल्स रहते हैं जो हम्म, व्हाट्सएप से आया है, चाहे कहीं किसी और सोर्स से भी आया है, तो वहां हाँ। पे है। तो वो सर मैंने सेव किया। व्हाट्सएप वही डिलीट करेगा जो व्हाट्सएप से आया है, ओके कहीं और का फाइल वो नहीं कर पाएगा, पर व्हाट्सएप से जो आया है वो फाइल उसका कॉपी डिलीट कर लेगा। ओके। आपकी बाकी वाली फाइलें सेव रहेंगी, वहां पे कुछ नहीं होने वाला। मैं वो अभी वो भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो होगा। तो ये टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस में तुम्हारा दो ऑप्शन थे। एक है मैं मेरी सारी नई चैट्स के लिए अप्लाई कर दूं कि मेरे को 90 डेज के बाद चैट नहीं चाहिए, और मैं सेलेक्ट कर सकता हूं किसी स्पेसिफिक चैट्स में जो मुझे नहीं चाहिए आफ्टर सम टाइम। अब इसमें फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो ये चैट्स की लिस्टिंग आती है। जब मैं वापस मैनेज स्टोरेज पे आ गया हूँ, मैनेज स्टोरेज में जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बिलो टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस चैट्स की लिस्ट आती है। इसमें आप देखेंगे ये मुझे साइज दिखा रहा है लेफ्ट में, राइट में, दैट कोई भी ग्रुप कितना मेमोरी यूज कर रहा है। सो दिस इज सॉर्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट मेमोरी, सॉरी, ये सॉर्टेड है जिसने सबसे ज्यादा मेमोरी यूज करी है उस सीक्वेंस में। हाँ, है ना। अब जैसे कोई ग्रुप है, अब इसमें से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किसी ग्रुप है जिसमें बस फॉरवर्ड मैसेज आते हैं पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो एक ग्रुप है मेरे पास, हेड स्टार्ट हब अलायंस। मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो इसमें जितनी फाइल्स हैं इस ग्रुप की वो सारी एक साथ मुझे दिख जाती है। अगेन मैं उसमें वही करूंगा, सेलेक्ट। अब मुझे यहाँ इसमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ एंड मैंने वो डिलीट कर दी। ऐसे मेरा, और मैं पीछे आऊंगा तो आप देखेंगे एक हेलो और कम हो गया। तो हेलो, ठीक है, तो ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी स्पेसिफिक चैट्स को जो मुझे नहीं। अब क्या होता है हमारे पास आजकल काफी प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, जैसे गो मैकेनिक है, ये मुझे प्रमोशनल मैसेजेस भेजते रहते हैं, इतनी इमेजेस मेरे पास हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट करी और डिलीट कर दी। तो डिलीट आइटम्स एंड एनी कॉपीज, 8 MB और खाली हो गया। तो इस तरीके से मैं चूज कर सकता हूँ जिसकी मुझे अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अब जैसे ये है, अब इसमें मेरे पास इतनी वीडियोस फोटोज हैं, मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट और डिलीट। इस तरीके से मैं स्पेसिफिक ग्रुप का भी चूज कर सकता हूँ। अभी देखिए कम हो गया थोड़ा सा। अब जैसे पर मेरे को कुछ है जो मुझे चाहिए तो वो मैं डिलीट नहीं कर रहा, इवन उनमें सबसे ज्यादा मेमोरी यूज हो रही है। तो ये इस इन तरीकों से व्हाट्सएप की जो फोटोज वीडियोज हैं वो एक लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टोरेज में आ चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।